Hello students, I hope you all are good. So in the previous class we have started the chapter number 11, that is transportation in animals and plants. So we have also discussed about the importance of the transportation in animals and plants. Okay. So today we are going to study about the circulatory system. Okay. In the circulatory system the first part comes blood. Okay. So ब्लड अगर हम लोग बात करें इट फ्लोज थ्रू द वेन. ओके. और जो वेन्स हैं यू कैन सी द वेन्स इन द बॉडी. दिस इज अ फुल सर्कुलेटरी सिस्टम, but we will discuss this circulatory system a bit later. So let us study about the blood first. Okay. So what is blood? Let me introduce you to that. What happens when you get a cut on your body? Obviously when you get a cut on your body the blood flows from there. Okay, that part. Okay, so blood flows out. But what is blood? So blood is the fluid which flows in blood vessels. Blood क्या है? एक fluid है. What are fluids? The fluids are the materials which can flow, जो क्या कर सके? Flow कर सके. So those are called fluids. And if we talk about blood, blood is a fluid which flows in blood vessels. जो किस में बहता है? Blood vessels में बहता है. Okay, so it transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. So remember, what is the work of this blood? The work of this blood is to transport the substances like digested food, okay, from which we get energy to the different parts of the body. और वो लेता कहाँ से है? ये डाइजेस्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसने क्या लिया? डाइजेस्टेड फूड लिया जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है, और उसी फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है कौन? ब्लड. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ ब्लड. Now, another, it carries oxygen from the lungs to the cells of the body. Remember, we don't need only food for the energy. You know, we have already learned in the respiration that including food, we also need oxygen. Okay, we also need oxygen for the release of the energy from that food. Okay, so uh, blood also transports oxygen from the lungs to the different cells of the body. Remember, अब ब्लड का काम ये भी है कि वो ऑक्सीजन को क्या करे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाए, या डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाए. ओके, कहाँ से? लंग से. बिकॉज व्हेन वी ब्रीथ लंग, द ऑक्सीजन इज stored in our lungs. Then from the lungs, what does take oxygen from there? Blood to the different parts of the body. Another work of blood, you know, when the food is digested, yeah, when the food is digested, or we can say when food reacts with oxygen which gives energy, then you know some waste is left. Okay, so in the different parts of the body, क्योंकि food blood ने different parts of the body तक पहुंचाया है, ऑक्सीजन भी different parts of the body तक पहुंचाया है, और उसी से हमें क्या मिला है? एनर्जी. नाउ आफ्टर गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फूड, वी कैन से वो जो फूड बचा हुआ है दैट इज द वेस्ट. तो उस वेस्ट को भी बॉडी से थ्रो आउट करना है, इजंट इट? सो उस वेस्ट को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करके कौन लेके आता है? ब्लड. ओके, सो ब्लड के यहाँ पर हम लोगों ने 3 काम पढ़ लिए मेन. टू ट्रांसफर द फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दूसरा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और तीसरा, वेस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके आना फॉर द एक्सक्रीशन. Okay, so these are the main functions of the blood. Now, how does the blood carry various substances? Blood is composed of fluid called plasma in which different types of cells are suspended. Remember, अब आप बोलोगे कि सर ब्लड इतने सारे काम करता है अपनी बॉडी में, होता तो एक ही है, isn't it? सो वही फूड लेके आता है, वही वेस्ट लेके आता है, वही ऑक्सीजन लेके आता है. आपका ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, यू कैन आस्क मी दैट सर ये तीनों मिक्स नहीं होते, वहीं पर मिक्स करके एनर्जी दे दे, isn't it? No. Why? क्योंकि ब्लड में क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं. ओके, जिनको हम लोग ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है,
सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं ब्लड्स में जिनका काम अलग अलग है, जैसे किसी का ले जाना खाने को, इजंट इट, किसी को वेस्ट को ले जाना और किसी का ऑक्सीजन को ले जाना. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट सेल्स इन द ब्लड. यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से दैट blood is consist of different types of cells. Okay, so today we are going to discuss about these different types of cells. One type of cell are red blood cell. एक टाइप की सेल कौन सी है? रेड ब्लड सेल. ओके, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ओके, तो रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होता है? एक रेड पिगमेंट कंटेन करता है, रेड कलर कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. आप लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा. ओके, so hemoglobin binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. So what is the work of hemoglobin now? hemoglobin क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेता है. it binds the oxygen with hemoglobin. okay, now ये हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ करके लेके जा करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है. ये किसका काम है? ऑक्सीजन को लेकर के जाना, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसका काम है? It is the work of hemoglobin. Okay, so it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर hemoglobin हमारी बॉडी में नहीं होगा then it is really very difficult to provide oxygen to the different parts of the body. Okay, and you know different parts of the body needs energy to perform function. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? वी विल नॉट गेट एनर्जी, क्योंकि वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा. ओके, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन? इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन and transport oxygen to the different parts of the body. So this is the main work of the hemoglobin. Okay, the presence of hemoglobin makes blood appear red. Okay, तो हीमोग्लोबिन का काम ही क्या है? ब्लड को लाल कलर का दिखाना है. यानी लाल कलर की चीज क्या होती है? वो हीमोग्लोबिन ही होती है ब्लड में. ओके, नाउ द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स. ब्लड के अंदर एक टाइप की और सेल्स होती है, वो कौन सी है? व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग अवर बॉडी. यू नो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जर्म्स जो है एंटर करते हैं, इजंट इट, थ्रू फूड और थ्रू हैंड्स, और वी कैन से कैसे भी एंटर कर सकते हैं जर्म्स, इजंट इट. तो उन जर्म्स के साथ फाइट करना किसका काम है? इट इज द वर्क ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, सो हम लोगों ने दो टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, थैंक यू.